अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करते हुए आज हम पेपर 5 यानी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कुछ पेपर्स देखेंगे। आज हमारे पास लास्ट 8 सालों के पेपर है। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन ज़रूर दबाएं सो दैट आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक और उसके साथ साथ शेयर भी किया कीजिए सो दैट कंटेंट जो है वो सारे मिनिस्ट्रियल कैडर के कोलीग्स तक हमारे पहुंच जाए और उनको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साल 2012 क्या पेपर आया था? क्वेश्चन नंबर 1 इसके दो पार्ट्स है। पहला, एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम की मदद से जो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। ब्लॉक डायग्राम एक ऐसी डायग्राम है जिसमें हम ज्योमेट्रिकली कंप्यूटर के जो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम की मदद से आपको वेरियस कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। पार्ट बी, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 2 पार्ट ए, एक्सप्लेन द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल इन द मेन मेन्यू बार ऑफ MS वर्ड। पार्ट बी, लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 पार्ट ए, लिस्ट एंड एक्सप्लेन 5 इनपुट डिवाइसेस। Part B, how does internet work? Explain the domain name system यानी DNS of internet. Question 4, write short notes on LAN, WAN and output devices. Question 5, answer any 10 questions. इसमें आपको 12 questions दिए हैं short type, इनमें आपको किसी भी 10 के जवाब देने हैं। What is meant by email? What is spreadsheet? What is the purpose point software? What is secondary memory? What is www? What is data? What is Internet Explorer? What is ROM? What is application software? What is virus? What is clipboard? What is byte? Question number 6. Differentiate the following. इन जो नीचे दिए गए टर्म्स हैं इनमें डिफरेंसेस दिखानी है। पार्ट ए, सेव एज वर्क स्पेस। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो बतानी है हमें, इनको डिफरेंशिएट करना है। पार्ट बी, प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। ठीक। पार्ट सी, इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल। साल 2013। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट एंड एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। क्वेश्चन 2, हाउ कैन a deleted file be retrieved? Question 3, what is the difference between system files and user files? Question 4, what is search engine? Explain its use. Question 5, what are advantages of MS Access over MS Excel? Question 6, what is a portal and how is it different from a website? Question 7, define Control C, Control V, Control F and Control S. Question 8, define hardware. What are hardware upgrades? तो ये थे इसके 8 क्वेश्चंस। इनमें से आपको कोई भी 5 करने को कहा जाता है। जैसे पहले पेपर में भी हमने देखे 7 क्वेश्चंस थे, तो उन 7 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस थे तो उनमें से 5 आपको करने को कहा जाता है। साल 2014। क्वेश्चन 1, व्हाट इज अ फाइल? व्हाट आर द टिपिकल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन फाइल्स? और हाउ टू ऐड अ प्रिंटर इन विंडोज XP? क्वेश्चन 2, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल? व्हाट इज ए जंक मेल? Or write a step-by-step procedure to set up a screensaver for Windows. Also mention how to set up selected wallpaper for the desktop of Windows. Question 3, Part A, what is multimedia? Explain 3 multimedia tools available with any operating system. Part B, what is dial-up? Explain how is it different from cable network. Question 4, explain the steps involved for each of the following in MS Word. Number 1, changing document margin. Number 2, mirror margin. Number 3, setting page margins. Question 5, write step-by-step procedure to create a simple presentation using PowerPoint whose slide include a title page yani slide, a figure, bulleted text, a bar graph and an organization chart. Or in Excel, we have 3 functions named round, round down and round. How are these different? Explain with examples. ठीक है। साल 2015। पहला क्वेश्चन जो है वो fill in the blanks की शक्ल में है। पहला पार्ट, maximum number of worksheet in the workbook is
Maximum zoom percentage is. Dash key is used to hyperlink the text. ABS minus 45676. It will return dash. In Excel, column ranges from dash to dash. Windows XP is dash. Dash option in dash menu is used to adjust one cell at a time in worksheet. Today brackets return dash. Dash is the short key for replace command. The left side of the formula bar is called dash. Question 2. Explain the following menus of Netscape Navigator. Also explain the submenu items, if any, for each of the menus. Edit, Window, Help. Question 3. Define the term downloading. Write the process of downloading the latest version of Microsoft Internet Explorer. Question 4. What is an address book? Explain the process of adding an address to address book. Question 5. Part A. Name any two view options available in PowerPoint. B. Name the tool used for finding synonymous and antonyms in Word. C. Explain briefly the usage of crop option of the picture toolbar. D. How is the switch user option different from the log off option? E. What is the difference between replying to a message and forwarding it? F. How are charts useful in Excel? Compare any three chart types available in Excel. Question 6. Explain the following. Internet, MS PowerPoint, Internet Protocol, WAN. ठीक है? साल 2016. Question 1. Explain any 5 types of input and output devices with their usage. Question 2. Why do we require an antivirus for an operating system? Name some of the antivirus that we use. Question 3. Explain the following terms. Email, utility software, application software. Question 4. Write steps for installing and uninstalling any application software from operating system. Question 5. How do we install a new operating system on a machine? What is the difference between Windows XP and Windows Vista? साल 2017. Question 1. Input and output devices in a computer play a role. Discuss. What is the extension of the following? MS Word file, PowerPoint file, Notepad file, Excel file. Question 3. Write the correct choice. In MS Word, a frame can be used to include A. Graphics, B. Tables and graphics, C. Text and graphics, D. All the above. Part 2. In the MS Excel, which of the following is not a text function? CHAR, LEN brackets, VAR brackets, ABS brackets. Question 4. How can you identify expired data sets? Explain with examples. Question 5. What is www? What is Byte? What is spreadsheet? What is ROM? Question 6. How can you break the Excel password? Question 7. How files are sent via email? Explain with examples. तो अभी हमने देखा ये था साल 2017 का पेपर, लेकिन जो साल 2016 का था उसमें टोटल 5 ही क्वेश्चंस दिए हैं. कोई भी उसमें जो है हमारे पास चॉइस नहीं है, तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पेपर में चॉइस आ जाए. ठीक है. नाउ साल 2018. क्वेश्चन नंबर 1. What are the peripheral devices of a computer? Elaborate the examples. Question 2. What is antivirus software? Give one example of an antivirus. How does an antivirus work? Question 3. What is Microsoft Windows? Briefly describe the history and development of MS Windows along with the various versions of Windows through the years. Question 4. Part A. Define web page. Part B. Define website. Part C. Define web browser. Part D. Define modem. Question 5. Define email. Write the various steps required to be followed for. Part A. Downloading files received through email. B. Attaching files while sending emails. Question 6. Part A. Explain internal memory and external memory of computer system. Give 2 examples each of internal memory and external memory. B. Differentiate between RAM and ROM.
Question 7. What do you mean by backing up of files? Why should you back up file system? Give reasons. साल 2020. Question A, Part A. Explain the various input and output devices. Part B. What are the files and how are they different from folders? Explain the various file naming conventions and also explain any 6 types of files. Question 2, Part A. What is an electronic mail? What is junk mail? Question 2, Part B. Write step-by-step procedure to set up a screensaver for Windows. Also mention how to set up selected wallpaper for the desktop in Windows. Question 3, Part A. Explain with relevant examples the usage and working of WAN and LAN. Question 3, Part B. Explain the various steps to uninstall software from a computer. यानी explain the various steps to uninstall software from a computer. Question 4. Explain the steps involved for each of the following in MS Word. Changing document margins, mirror margins, setting page margins. Question 5. Write a step-by-step procedure to create a simple presentation using PowerPoint whose slides include a welcome page slide, a figure, bulleted text, a bar graph, and an organization chart. Now, overall important questions. Input and output devices, email and junk mail, LAN, MAN, WAN, installing and uninstalling a software or operating system, virus and antivirus, MS Office, Word, Excel and PowerPoint, operating system especially Windows, software, hardware, backup of files, ROM and RAM. ठीक है, ये आपके important questions है. With this I conclude today's video. Thank you very much.